there's a question, sir, that always I've been meaning to ask somebody. Does the law actually deliver justice? And I think I have the perfect person with me today. Firdos Mirza, he's a senior advocate. Um, he has spent 25 years in the room of courts. He runs one of the most respected chambers in Nagpur. Welcome to the podcast, sir, and thank you so much for your time. I have spent 31 years. I'm so sorry. So sorry, sir. So, what do you think, sir? Does the law ever deliver justice? Look, the concept of justice, whatever you have or the common people have, and what we do in courts, the courts deliver judgments. Because justice is having a different meaning for different people. True. That cannot be universal. Mm. Therefore, to control the behaviors, just to have a good society, we made laws. Mm. And the courts write judgments as per laws. True, correct. So before I take you deeper into this questions that I'm going to ask you, sir, let's start at the beginning. Who were you before you became a lawyer? What was your life like? Where do you come from? I come from a small town in Yatmal district. In fact, my family belongs to a village in Ner Taluka, that is Dhanajamanikwada. That has been made more popular by one of my first cousin, Dr. Mirza Rafi Ahmad Beg. He was a very respectable poet in Marathi and stand-up in Marathi. We just lost him. So that village is made popular. The name of village is made popular by. My father, after his schooling, shifted to Darwa, where I was born and brought up. I did my 10th to education 10th at Darwa Zilla Parishad School in Urdu medium. Thereafter, did my 12th from Yavatmal. In between 11th from Amravati. Right, sir. Okay. Different places. Then graduation from Amolakchand College, Yavatmal. Law from Nagpur. That's it. So, how did law come into the picture, sir? Did you go actively seeking for it, or did you just happen to find it? I was a little bit reluctant. Okay. Because during college life, and especially graduation, you get exposure to so many things. So I was exposed to the social issues. While I was in college, I was in NSS also. That was a very active organization at the relevant time, that is National Service Scheme. So in 1988, that is first year of my graduation, I was selected for its topmost camp. What is it? The Republic Day. I represented there. I worked on Rajpath, as it was called at the relevant time. But that is not for just walking on Rajpath. That camp is make you connect with the entire India. Because the students, the young people from all over India, they stay together for minimum 40 days. True. And then different problems, different walks of life that you come to know. Thereafter, during my law, in students and in youth, there was a major problem regarding AIDS, HIV that time. So we used to work on that also. Government of India announced a competition for content creation. In today's words, that was content. That time it was not there. And one project was to be started, that was University Stockades. I used to write dramas at that time and direct them. Oh, really? So I prepared a street play. Out of that street play, one video film was made. Luckily, that was adjudged as best in India, and we got the national award. What year was this, sir? This was in 1992. Okay, nice. 1992. It was there. Is it still available somewhere on YouTube? Can we find it? I never searched it. Oh, okay. Because that time YouTube was not. No, obviously.
So it was there. Then I was inducted into the core group for university dockets. We drafted the entire thing for India. Then I was invited for Commonwealth Youth Program. Right, sir. I participated in that. Then I represented India uh, in a international workshop on HIV in Malaysia. So all these things were going on. At the same time, we were working on water conservation also. Okay. In Nagpur district, with the help of different NSS units, we constructed around 500 check dams. Okay. During that period, 90 to 93, without taking any help from the government. That time, Zilla Parishad president was our erstwhile Home Minister, Mr. Anil Deshmukh. Mm. So he assisted us by providing the metal, what you call it, jali, for preparation of gabion structure. So only with that mesh, that is metal mesh, that was the only assistance given by any government agency. And we constructed around 500 check dams. So these activities caught eye of government. Okay. And though others worked, but I was recognized and I was awarded National Youth Award at that time. Okay. So I was amongst those 13 fortunate to receive it at the hands of the then Prime Minister. Relevant time in 1994, so Narasimha Rao was Prime Minister. So such type of life was going on. So I was intending to go in social work. Mm. My father, he is still a practicing lawyer. So he talked to me in this. He said that, look, and that still echoes in my mind. That okay, fine, you will be entire life doing the social work, working for the people. From where you will earn? Mm. And how will you manage? So I said, ho jayega. He said, no. You will take out the piece of cake which was meant for the last person of the society. Mm. It will not be earning. Yeah, true. It will be sharing with those people who are unprivileged or underprivileged, and you are not. True, true. So it would be a sin, according to him. Yeah, true. Because that would be your profession. You would be professional social worker, and he didn't approve it. Mm. So it also appealed me, yes, that's true. Today I am maintained by my parents. Then I'll be maintained by those poor people for whom I am working. So I asked him, what should I do? I was intending to do MSW. He said, no, do law. And you will realize that while practicing also, you can do many services to the society. That is how. And that is how I entered into law. Right. But sir, Nagpur has a very specific legal and a civic identity. The RSS headquarters, Dr. Ambedkar's legacy. There's a High Court as well. So it's a mix of a beautiful mixture of a lot of things. Is that the reason why you stayed in Nagpur, or why did you not? No, I didn't stay in Nagpur. Okay. After doing my law, I went back to Yavatmal. Okay. I practiced there for almost 8 years. Right. Then one fine morning, I shifted to Nagpur in 2003. But why not Bombay or Delhi? No, because the jurisdiction of Nagpur Bench was Yavatmal. Okay. 11 districts of Vidarbha were its jurisdiction. Right. And it was a comfortable place. Nagpur is a very beautiful city. Right, obviously. Because I'll tell you, I have friends, lawyer friends at Delhi also. I have lawyer friends at Nagpur also. Many times in the morning when I am on walking, I just call them, how are you? They said, we are in train, we are in car, traveling. 100%. And I am on walking. What more you want from your life? Exactly. True, true. Do you remember what the first day was like in the courtroom, sir? No, look, the first day in the courtroom for the junior is just to observe his senior. Obviously.
He has nothing to do. It's only You have to observe Yeah. your senior for many months, right. and then you get an opportunity to appear. If I ask you ki when you look back, what was the most difficult thing you learned that you should have known tabhi? That you will have to read entire life. That's true. That's true. But sir, for a lay person who's watching this, एक कोर्ट रूम में क्या होता है इतना? बिकॉज आई थिंक अभी लोगों को ये समझ गया है कि जो हम मूवीज में देखते हैं एंड रियल लाइफ इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो. मोस्ट पीपल विल बी, आई डोंट नो, फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट कि दे विल नेवर सी इनसाइड अ कोर्ट रूम. हाउ डज इट, क्या क्या होता है सर? नहीं देखो, जो गलत फहमी है कि कोर्ट में ड्रामा होता है, ये सबसे बड़ी गलत फहमी. राइट. सबसे पहले हमको समझना होगा कि वकील कौन होता है और वो क्यों होता है. हर नागरिक का ये अधिकार है, एवरी सिटीजन हैव अ राइट टू प्लीड हिज ओन केस. लेकिन वो खुद नहीं कर पाता, इसलिए वकील होता है. अब वकील का जॉब मैं आपको बताता हूँ दूसरे प्रोफेशन से डिफरेंट कैसा है. अब आप बहुत सारे गैजेट्स यूज करते हैं. अगर आपको आपके लैपटॉप से आपके मोबाइल में कोई चीज़ ट्रांसफ़र करनी है तो आपके पास ऐप्स है, वाईफाई से वो होते हैं, या पहले यूट्यूब से, अपने ब्लूटूथ से हो सकते थे, केबल से हो सकते थे. अब यहाँ वकील का जॉब है उसका क्लाइंट जो है उसकी बात पहले अपने दिमाग में उतारना और खुद के दिमाग से जज के दिमाग तक के पहुँचाना. इसमें कोई केबल इन्वॉल्व नहीं है, ब्लूटूथ इन्वॉल्व नहीं है, वाईफाई इन्वॉल्व नहीं है. फिर एज अ डॉक्टर जब आप सर्जरी करते हो एज अ सर्जन, तो आप होते हो, एक बेहोश पेशेंट होता है और कोई नहीं होता. ट्रू. लेकिन मैं जब कोर्ट में परफॉर्म करता हूँ या अपनी केस प्लीड करता हूँ तो सबसे पहले मुझे जज करने के लिए जज बैठा है, मुझे डिस्टर्ब और अपोज करने के लिए मेरा अपोनेंट लॉयर है, मुझे देखते हुए पीछे इंतजार, अपने मैटर्स के इंतजार में कई सारे लॉयर्स बैठे हैं कोर्ट रूम में. मेरा अपना क्लाइंट बैठा है, मेरे क्लाइंट का अपोनेंट बैठा है और बहुत सारे क्लाइंट्स बैठे हैं. कोर्ट रूम पूरा भरा हुआ है और इतने सबके देखते हुए जो पूरे होश में है, मुझे अपना काम करना है. ट्रू. तो ये लॉयर का लाइफ है. तो कोर्ट रूम में जो होता है, देखिए कोर्ट रूम में कोई जोर से चिल्लाता नहीं है, चिल्लाने वालों को पसंद नहीं किया जाता. मेरे क्लाइंट ने पेश किए हुए फैक्ट्स और इस मुल्क के कानून, इन दोनों को जोड़ के, और सुपीरियर कोर्ट्स ने जो उसको इंटरप्रेट किया है उन कानूनों को, वो सारी नज़ीरें दे के मुझे कोर्ट के सामने केस पेश करनी है. बस इतना ही करना है. वकील खुद का कुछ नहीं कहता है. वो जो कहते हैं कि सच झूठ, वकील कभी कुछ नहीं बोलता है खुद का, क्योंकि वो उसका पर्सनल कुछ नहीं होता है. जो क्लाइंट ने कहा है वही उसको प्रेजेंट करता है. अगर वकील खुद से कुछ बोलने लगे या खुद के फैक्ट्स ऐड करने लगे तो वो तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है. दैट इज व्हाई दे से ना कि नेवर लाई टू अ लॉयर. यस, सब कुछ बता दो. एंड आई फर्दर से नेवर लाई टू द कोर्ट. That is also true. You have seen a lot of young lawyers as well over years, sir. What is one skill that you see one skill that young lawyers are underestimating right now? There are a few things, not a single thing. एक ह्यूमन नेचर होता है कि हमको कुछ लोग पसंद आते, कुछ नहीं आते, फॉर नो रीजन. तो जो कोर्ट मैन कर रहे जजेस वो भी ह्यूमंस है. तो सबसे पहले ये होता है आपका ग्रूमिंग, आप कैसे नजर आते हो. तो जो अच्छे से बाल कटे हैं, दाढ़ी ट्रिम किया हुआ है, व्हाइट शर्ट व्हाइट दिख रहा है, ब्लैक कोट ब्लैक दिख रहा है, बेसिक्स. मैं देखता हूं कि बहुत सारे जो यंग आते हैं ना, इन बेसिक्स को मिस कर जाते हैं. ओके. देखिए वहां आप कोई दूसरी एक्टिविटी के लिए नहीं आते हो. वहां आप अपने क्लाइंट की केस पेश करने के लिए आते हो. बस
वन सिंगल मोटिव बस. लेकिन अगर आप अपने दिखने के चक्कर में क्लाइंट की केस खराब कर जाते हो तो क्या करना. नंबर 1. नंबर 2, देर आर नो शॉर्टकट्स. हर केस में उतनी पढ़ाई आपको करनी ही करनी है, कोई शॉर्टकट हो नहीं सकता. ये दूसरा हमने समझने की जरूरत है. तीसरा, अनलेस यू असिस्ट सम सीनियर फॉर अ फ्यू ईयर्स, आपने कभी भी खुद होके एकदम से शुरू नहीं करना चाहिए. ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ गुरु शिष्य परंपरा का बहुत महत्व है. क्योंकि लॉ कॉलेज में हम जो पढ़ते हैं, देखो मैं फिर से आपको बताता हूँ, मेडिकल कॉलेजेस और लॉ कॉलेजेस का फर्क. मेडिकल कॉलेज में आपके सामने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है. क्योंकि पेशेंट्स होते हैं वहाँ. लॉ कॉलेज में वो नहीं होता है, हमारा थेरोटिकल होता है. मूड कोर्ट्स होते हैं मैक्सिमम मूड कोर्ट्स होते हैं, लेकिन मूड कोर्ट्स भी जो होते हैं और कोर्ट रूम जो होता है उसमें बहुत जमीन आसमान. 100%. तो आपको जो प्रैक्टिकल केस का ट्रेनिंग है, हाउ टू डील इट, क्योंकि यहाँ आप ह्यूमन बॉडी से नहीं, ह्यूमन साइकी से डील कर रहे हो. बॉडीज आर सेम, साइकी इज डिफरेंट. 100%. तो उसके लिए आपको सीनियर के पास ही सीखना चाहिए, उसकी उंगली पकड़ के. जो डायरेक्ट शुरू करते हैं तो अपने बैच से थोड़े से आगे होते हैं पहले 3 साल, उसके बाद वो कभी नजर नहीं आते. हाँ, होता है. तो ये 2 चीजें तो मेन है जो मैं आज. अपडेटिंग योर नॉलेज डेली इज अनदर थिंग. अभी तो आई थिंक मोस्ट ऑफ लॉट ऑफ पीपल मस्ट बी गोइंग थ्रू वो BNS अपडेटिंग, सेल्फ अपडेटिंग चल रहा होगा सर अभी भी. आई एम गेसिंग फ्रॉम IPC टू BNS जो भी चेंज आया है, आई थिंक एवरी मस्ट बी. वो तो एक कानून हुआ ना. हाँ, ऐसे तो बहुत सारे. 100%. हाउ डू डील विद फेलियर सर, क्योंकि कभी कभी कुछ जजमेंट्स डोंट कम इन योर फेवर. सो एज अ लॉयर, हाउ डू यू डील विद सच थिंग्स सर? Look, I don't believe in this that it is failure of lawyer. Okay. Not a favorable judgment is not a failure. It is not my case. Explain. I don't have any stake in any case. How so? Yes, that is the basic of a lawyer. Okay. अगर कोई client आता है, look at check bounce case. Check of 100 rupees or check of 1 crore rupees. For you, it's the same thing. For me, it is the same thing. True. My fees is the same. I don't have percentage of fees. If I put a percentage in that, then you have a stake. No, it is professional misconduct. Oh, okay. Acha, you are not allowed to do that. I am not allowed to do that. Okay. Then I'll not remain a lawyer. I'll become stakeholder in that case. Okay. So the case is of the client. I am just putting it before the court. The only thing which I expect from myself is 100% preparation. Okay. Whatever I could do. Look, every lawyer has his own limitations being a human. Nobody is same. For preparing, if I require 2 hours, someone is there with better brain who prepares in half an hour. But I should be satisfied that I have prepared completely. I have not left anything back. And then if I present a case, but judge is not convinced, so it is failure of the client. It is not my failure. I don't take it like that. And therefore I don't have any burden on me. If someday it happens that I fail to prepare, then it is my failure. True. Then it haunts me for a long period. It never happened, or happened seldom, once or twice maybe. Sure, So I cannot claim. But this is so different. Matlab, if a patient comes to me कि सर मेरी आँख ये ऐसा हो गया, and then fix करो आप, and for some reason the outcome is not favorable, most doctors go into a self-questioning zone. अरे भाई मेरे से क्या हो गया? Why did I not do well? Was I not good enough? मैंने सब किया तो सही था, क्यों नहीं हो रहा है?
and the patient will go and say, "अरे यार इनके यहाँ बराबर काम नहीं होता, now I will go to another doctor." This doesn't happen in the. It happens. Okay. It happens. हमारे पास जैसा आपके यहाँ सेकंड ओपिनियन है, हमारे पास अपील है. Right. तो फॉर अपील ही गोज टू अनदर लॉयर. Okay. पर ये बहुत कम होता है. Okay. If your client is satisfied that you have done everything what you could have done, then he will remain with you. Okay. True. हाँ, बराबर. होता है कभी कभी, I have a very. Still, I have many clients whose another cases I have lost, but they are with me. Still, they are with me with the new case. So a parallel that I can draw from this is, I had a patient 2-3 डॉक्टर्स के बाद फिर मेरे पास आया, and I was like, मैं करूँगा तो सही, but I can't promise you the outcome. Yes, you are not a god. But वो उसका favorable outcome नहीं था, क्योंकि बहुत ही complicated case था. But sir, he chose second eye के लिए, he chose to stay with me only. So वो trust building exercise, I can totally relate to that as well. Right. So does the art of argument really matter versus the strength of law? Yes, but both go hand in hand. Okay. Your argument doesn't have force unless you are prepared on law. True, barabar. You cannot bluff. Because the judge, he was also a seasoned lawyer earlier. He knows the law. There is an opponent to you also there. He will show you the mirror that you are not prepared, you are bluffing. So I will give 70% to preparation on law and 30% to the art of arguing. Okay. You practice in two very different worlds, corporate law and litigation as well. How do you balance them together, sir? No, they go hand in hand. They go hand in hand? Yes. No difference in that? There is no difference. So let's talk about PILs. अगर किसी को public interest litigations, please एक बार एकदम explain to people जिनको नहीं पता इनके बारे में. एक बेसिक लॉ का कंसेप्ट है लोकस स्टैंडी. यानी कोर्ट में वही जा सकता जिसको तकलीफ है खुद को. अगर आपकी जुबान में बोलूं तो गोली उसी ने खाना चाहिए जिसके पेट में दर्द है. लेकिन पीआईएल का कंसेप्ट उससे एकदम अलग है. ओके. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस भगवती हुआ करते थे. उन्होंने ये कंसेप्ट इंडिया में लाया कि आपको तकलीफ है, आप कोर्ट नहीं जा सकते, या आपको पता ही नहीं है कि आपके क्या अधिकार है, तो आपके लिए मैं कोर्ट में जा रहा हूँ और कोर्ट को बता रहा हूँ कि ये इनके अधिकार है, लेकिन सरकार इन तक पहुंचा नहीं पा रही है. तो वो जब डेवलप होता गया लॉ, तो जैसा बंधुआ मजदूर वाला केस आया, ओल्गा तेलिस वाला केस आया, फिर एनवायरनमेंट के बहुत सारे केसेस आए, ये ऐसा लॉ डेवलप होता गया. और वो सही, आपने जो पहला क्वेश्चन किया था जस्टिस वाला, वो सही मायने में कॉमन मैन को जस्टिस देने वाला लॉ डेवलप हुआ है. तो उसमें जो अपने आप कोर्ट में नहीं जा सकते, जैसे हमने कई सारे चलाए हैं. अगर मैं अपने पीआईएल्स की बात करूं, आई वॉज फॉर्चुनेट टू गेट देम. जैसा पहला पीआईएल मैंने चलाया था वो था यवतमाल जिले के आंध्रा बॉर्डर पे कोलाम लोगों का. एक रिपोर्ट था कि बहुत सारी डेथ एक साथ हुई थी. कोलाम एक ट्राइब है, प्रीमिटिव ट्राइब है. तो बाद में मालूम पड़ा था कि दैट वाज स्टारवेशन डेथ. Okay, when was this, sir? This was in 2004-05. Okay. तो आज़ादी के 50 साल के बाद भी अगर इंडिया में स्टारवेशन डेथ हो रहा था तो उससे ज़्यादा हमारे लिए शर्मिंदगी की कोई बात नहीं थी. लेकिन उनको पता ही नहीं था कि उनके लिए कोई संविधान आया हुआ है, हम आज़ाद हो गए, कोर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं जहाँ जाना होता है. ये कोलामों को पता ही नहीं था. तो प्रेस कटिंग्स आई, उनके भरोसे हमने वो केस चलाया. तो बाद में पता चला कि इनका कभी सर्वे ही नहीं हुआ था, उनके पास कोई बीपीएल कार्ड नहीं था, उनको अनाज पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, जंगल में रहते थे, अनडॉक्यूमेंट थे. तो ऑलमोस्ट 30,000 फैमिलीज गॉट डॉक्यूमेंट्स लेटर. ओह बाप रे, इतना मतलब 2004-05. यस, बाप रे. अब उसी लाइन में आगे बाद में एक बार मेरघाट से कोर्ट को पत्र आया
कि भाई वहाँ जो आदिवासी है वो गर्मी के सीज़न में, ठंड के सीज़न में जंगल से सामान इकट्ठा करते हैं, लेकिन बारिश में नहीं हो सकता। तो बारिश में उनको सरकार की तरफ से एक स्कीम है खावटी नाम की, दैट इज़ लोन। तो उसमें उनको अनाज, तेल, शक्कर, ये सब चीज़ें लोन के तौर पे दिया जाता, और उनको बाद में फॉरेस्ट प्रोड्यूस वापस करने हैं, वो उससे हो जाएगा। तो दैट वाज अ गुड स्कीम। लेकिन दिस वाज, आई एम टॉकिंग अबाउट 2010-11, और जिस रेट से उनको दिया जा रहा है या बताया जा रहा है वो बहुत एग्जॉर्बिटेंट है, ऐसा कंप्लेंट था। तो उस टाइम जो जज साहब थे, ही वाज नोइंग कि मैंने इससे पहले कोलाम वाला मैटर डील किया है, ही अपॉइंटेड मी अमाइकस इन दैट केस। ओह नाइस। सो दैट हैपेंड। देखिए कभी कभी बड़ा मज़ेदार चीज़ें होती है लाइफ में। तो मैं तो किस्सा, मैं घर पहुंचा तो वाइफ कहने लगी कि अपने को किराना लाने जाना है। बोला चलो। आई यूज्ड टू एंजॉय दैट गोइंग विद हर। आई स्टिल एंजॉय गोइंग टू मार्केट्स, क्योंकि मार्केट में जो एक्सपोजर आपको कॉमन मैन के प्रॉब्लम्स और इश्यूज से होता है वो और कहीं नहीं होता। गोल बाजार चौक पे किराने की दुकान में मैं जस्ट किराने के वो शॉपिंग करने लगी, मैं दुकानदार के पास बैठा रहा, चर्चा चल रही थी। मुझे सामने एक तेल का ब्रांड नजर आया और वो केस याद आई, क्योंकि उसमें वही ब्रांड रेफर किया था। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या रेट है इसका? तो बोले साहब अगर आप एक लेंगे तो 1 किलो का या 1 लीटर का जो पाउच था वो आपको 72 रुपीज़ का पड़ेगा, लेकिन अगर आप पूरा बॉक्स लेते हैं 12 का तो आपको 64 या 66 का पड़ेगा एक। मैं बोला यार ऐसा कर, तो मेरे को एक पाउच दे दे और एक बॉक्स दे दे और दोनों का बिल चाहिए। बोले क्यों साहब? बोला चाहिए। बीवी भी आश्चर्य में कि क्यों। मैंने वो सिंगल वाला भी एक अलग से बिल लिया, बॉक्स वाला भी अलग से बिल लिया। नेक्स्ट डे मेरा पर्सनल एफिडेविट कोर्ट में फाइल किया। तो जो मुझे नागपुर के रिटेल मार्केट में 72 में सबसे छोटा यानी सबसे रिटेल वाला माल मिला है, वो बल्क में गवर्नमेंट 96 रुपीज में ले रही थी उसको। ओहो, जबकि it would have been less than 66 also ideally. उस टाइम नमक, साधा नमक मार्केट में 25 पैसे किलो हुआ होगा, वो 2 रुपए किलो था। यानी मुझे रेट्स याद है आज भी, आफ्टर सो मेनी ईयर्स। So that is somebody's funneling money, ये भी हो सकता है ना सर? तो कोर्ट ने नेक्स्ट डे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है ट्राइबल डिपार्टमेंट का, उसको वारंट इशू किया कि यू रिमेन पर्सनली प्रेजेंट। और पर्सनली प्रेजेंट जब टॉप ऑफिसर होता है तो पूरा सिस्टम दुरुस्त हो जाता है। अच्छा, ओके। और पूरी स्कीम चेंज हुई, फिर रीजनेबल हुई। सो दीज आर द PILs। दिस इज सच ए नाइस थिंग सर कि यू हैव डन अ PIL, एंड आपने जिन लोगों को के बारे में किया, probably they will never even know your name, Yes, है ना? This is many people don't know my name. so then it goes back to your father कि you can do social service by Exactly. being a advocate as well. But at the same times, the people for whom we are doing PILs, they fail us. How so, sir? Now one PIL is pending. There also I am amicus. That is regarding management of school buses. अब स्कूल बसेस देखिए, आज क्या है कि लोगों के घर में एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे हैं। सब चाहते हैं कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाएं। घर से कितना दूर है ये मायने नहीं रखता। बच्चे बसेस से ट्रैवल करते हैं, उनकी सेफ्टी का क्या? तो पहले बसेस आइडेंटिफाई नहीं हो सकती थी, हमारे उस PIL में रूल्स बने, और आप देखिए अभी सारी बसेस येलो हो गए। फिर बसेस में लेडी अटेंडेंट होना चाहिए, ड्राइवर कैसा होना चाहिए, बसेस के अंदर CCTV कैमरे, GPS होना चाहिए, ये सारे रूल्स आए। एक रूल उसमें आया कि हर स्कूल की एक बस सेफ्टी कमेटी भी होनी चाहिए, जिसमें पेरेंट्स का भी रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। बराबर। मैक्सिमम स्कूल्स में ये कमेटी या तो नहीं है, अगर है तो उसकी मीटिंग्स नहीं होती, ऑन पेपर है सिर्फ। फिर उसमें एक रूल है कि आपकी बस शहर में कहाँ रुकेगी उसके सेपरेट स्टॉप्स होने चाहिए। ओके। हमने महानगर पालिका और सरकार के पीछे लग के उस स्टॉप्स डिक्लेयर करवाए, उन्होंने मैक्सिमम जगह बोर्ड्स लगवा दिए, लेकिन पेरेंट्स को लगता है कि मेरे घर के सामने रुकनी चाहिए।
That is ये also not किसके right. सेफ्टी के लिए? फिर वैन्स अगर आप देखेंगे तो कई वैन्स इलीगली गैस में कन्वर्ट हुई है, जिसमें डिक्की में आपको उसका CNG सिलेंडर नजर आता है। मुझे उन पेरेंट्स पे कमाल लगती है कि हम इनके लिए यहाँ लड़ रहे हैं और वहाँ अपने बच्चे को वो सीएनजी के उसके such a big risk. सिलेंडर के ऊपर बैठा के भेज रहा है। ऑटो 6 बच्चे जा सकते हैं ऑटो में, 3 बड़े या तो 6 बच्चे। 6 बच्चे वाले ऑटो आपने कितने देखे? सर हम लोग 12 जाते थे ऑटो में स्कूल, फिर उसके बाद वो 3 वाला रूल तो आया आपके था। पेरेंट्स को आपकी फिक्र नहीं थी? उनको शायद पता भी नहीं था सर। आई मीन सेफ्टी बेसिक्स अगर पता नहीं है तो हम हाँ। किसके लिए लड़ रहे हैं? ट्रू। ये किसके लिए कर रहे हैं? सबसे पहले तो मुझे यही अजीब लगता है कि घर के पड़ोस में एक अच्छी स्कूल है और आप 20 किलोमीटर दूर के स्कूल में क्यों भेज रहे हैं? राइट टू एजुकेशन आया क्यों है? वो इसीलिए आया कि आपके घर से 1 किलोमीटर के अंदर के स्कूल में आपके बच्चे को एडमिशन मिल। बराबर। लेकिन आप फीस में इतने पैसे खर्च कर रहे हो और बच्चे के सेफ्टी पर नहीं खर्च कर रहे हो। फिर हम जो सेफ्टी के लिए करना चाहते हैं आप उसको ब्रेक मारते हो कि आपको डर लगता है कि इसमें पैसे बढ़ जाएगा। बराबर। तो ये भी एक दूसरा एस्पेक्ट है। ट्रू। जैसे रास्तों पे के रिलीजियस स्ट्रक्चर्स, देखिए रास्ते फुटपाथ ये किस चीज के लिए? पब्लिक। फुटपाथ आपके चलने के लिए, रास्ते गाड़ियों के चलने के लिए। अगर वहां हमारे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स आने लगेंगे तो क्या होगा? तो हाई कोर्ट ने उसकी सफाई करवाई एक बार, तो लोगों ने उसके खिलाफ में मोर्चे निकाले। वो तो सर forget about law also, मैं एक common sense I think about it. I'm not a very religious person. I always say that. But when I observe कि if somebody is very religious, वो फुटपाथ पे छोटा सा मूर्ति क्यों इंस्टॉल करेंगे? हाँ, that is insult to it. It is a disrespect to God. वो किसी भी religion का हो, it is a disrespect. आप वहीं पे चलते हो, कचरा फेंकते हो, वहीं पे थूकते हो, पान खा, it makes no sense at all. और अभी जिस तरह से रिलीजियसली चार्ज्ड एटमॉस्फेयर है, मैं आऊंगा उसके ऊपर थोड़ी देर से, तो उसमें तो और वो हम हमारी अगली जनरेशन के लिए कैंसर बना के जा रहे हैं ना। बहुत सही। तो ये इस तरह के जो पीआईएल्स में दोनों तरह की चीजें, एक तो लोगों को पता नहीं है कि कौन आपके लिए लड़ रहा है और क्यों हो रहा है। दूसरा, लड़ाइयां चल रही है लेकिन जिनके लिए लड़ाइयां हो रही है वही उसी को पीछे खींच रहे हैं या उसके पूरे फायदे नहीं ले पा रहे। ऐसा कभी हुआ है सर, व्हेन यू नो द केस इज राइट, somebody's come to you, you listen to them first and then you understand कि इसका merit है, I can do something about it, but yet you decide I don't want to take this case. बहुत कम होता है ऐसा। And why does it happen is what I'm trying to understand. नहीं, many a times what happens कि जो उसकी केस सच तो होती है, लेकिन आप एग्जैक्टली उससे उल्टी केस पहले कभी आर्ग्यू कर चुके होते हो, तो इट डजंट लुक्स गुड। बराबर। कि आप दोनों साइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट काइंड ऑफ, कभी कई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उनके अपोनेंट्स आपके ओरिजिनल क्लाइंट्स होते हैं कभी, या क्लोजली आपके फ्रेंड्स होते हैं, तो उस टाइम आपको उनको साफ तौर से बता देना होता है। कई बार ये होता है कि आपको वहाँ पे ट्रस्ट डेफिसिट लगता है क्लाइंट का आप में, तब भी आपको केस छोड़ देंगे। कभी ऐसा होता है कि you have a particular start developing a particular bias and then फिर you understand ये मेरा bias आ रहा है इसमें, so I should not take this. हाँ, it happens. अभी रिसेंटली हुआ है, जैसे माइनॉरिटी स्कूल्स हैं, तो राइट टू एजुकेशन इज नॉट अप्लीकेबल टू माइनॉरिटीज, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। माइनॉरिटी स्कूल्स, okay, because minority schools have their fundamental rights under Article 29-30 to establish and administer their educational institutions. तो अभी एक लॉ आया कि हर अंडर राइट टू एजुकेशन सारी जो स्कूलें हैं उनको जो टीचर्स हैं उनके क्वालिफिकेशन में एक एडिशन आया कि दे शुड बी टीईटी क्वालिफाइड। ओके, टीचर एजुकेशन टेस्ट। तो माइनॉरिटी स्कूल्स चैलेंज दैट प्रोविजन कि ये हमको अप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे जो पूल है वो छोटा हो जाता है जो कैंडिडेट्स आने वाले हैं पढ़ाने के लिए। तो दे अप्रोच टू मी, बट आई सेड नो, आई विल नॉट
बिकॉज आई हैव अ बायस। बोले क्यों? मैं बोला इसका मतलब ये होगा कि बाकी जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जिन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, they will get better teachers because those will be TET qualified teachers, and in your schools there will be no TET, that means substandard teachers. So this would not be in the interest of minorities, but it will go against the interest of minority students. बराबर, makes sense. So I will not come. Okay. So I refuse to appear in that because I have a bias. हाँ, बराबर, समझ गया. So you have also written about the OBC ruling of Supreme Court 2021 Yes. when the mandates were struck down. Yes. Does that what does that do to your faith in the judiciary, sir? No, faith. I have a faith in judiciary. As I said, that the people who are manning the judiciary are also humans with all the human strength and weaknesses. So there are always views that sometimes shakes your faith. So it happens in many cases, just like now the matter regarding the voters list is going on in Supreme Court, and that really has shaken the faith of the people of India. क्या आपको खुली आंखों से दिख रहा है कि जहां इलेक्शन होने वाले हैं उन स्टेट्स के वोट्स कम किए जा रहे हैं और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन आप आंखें बंद कर ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट. I was reading about something the election commission called out. Some people were put in a category called as pending adjudication करके. I don't think that's allowed in the system. No. अरे इलेक्शन कमीशन आपको वोटर लिस्ट मशीन रीडेबल नहीं दे रहा है. Something is wrong. Something is wrong, and that has really shaken. And I always feel that Supreme Court has let down the citizens of India in this case. It has failed to perform its duty of protecting democracy. That is my personal feeling. तो ऐसी केसेस आती है. You have also publicly written about the intolerance, quoting Article 15 multiple times. Yes. What made you write those things, sir? A lot of people choose to keep quiet also, you know. Then I am failing in my profession if I am keeping quiet. Okay. As a lawyer, I have taken oath to protect citizens from tyranny of the state. And if something is happening, I have to speak out. And that too, I need to make people aware of their rights. True. But you know, sir, as a constitutional lawyer who practices this, you must have read the book आगे पीछे ऊपर नीचे so many times. And we are living through times when the constitution is being questioned multiple times, and there is a group of people who celebrate it also. So this conflict is happening. Where do you think lies the strength of the constitution in today's times? No, for that, I'll quote architect of a constitution, Dr. Ambedkar. This is not the new allegation. In the Constituent Assembly, in the last session of Constituent Assembly, many has accused that Constitution is not good. It is very bad. And so and so. So Dr. Ambedkar said that, I quote him, that a bad constitution becomes good if it is in hands of good people. And the best constitution will become bad if it is in the hands of bad people. तो डिपेंड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को या सरकार को कौन चला रहा है. अगर कॉन्स्टिट्यूशन बुरा है लेकिन हम अच्छे से उससे काम लेते हैं तो वो अच्छा मुल्क अच्छे से चलेगा. तो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मुझे उनकी नीयतों पे हमेशा शक होता है. आप अच्छा काम कीजिए. जो बेसिक्स है, एक इंसान को इंसान की तरह जीने का आप अधिकार दीजिए. दैट्स ऑल. अगर हम वो नहीं दे सक रहे तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को इल्ज़ाम नहीं लगा सकते. You are at fault. You are at fault. Bravo. So, where do you think the constitution is most under pressure right now, sir?
किस पॉइंट पे? Your fundamental rights are under pressure. Hmm. Many of your rights are taken away, you don't know. And our constitutional courts have failed to protect them. When Dr. Ambedkar was asked in Constituent Assembly that according to you, which is the most important article in the Constitution, he replied that according to me, Article 32 is soul of the Constitution. तो संविधान का आत्मा Article 32 है. And what is that? Article 32 is a fundamental right of every citizen to approach the Supreme Court with a complaint that my other fundamental right is taken away by the Constitution or violated. तो ये आपका संवैधानिक नहीं बल्कि मूलभूत अधिकार है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाए. Recently, violation of fundamental right in Assam by its own chief minister was the complaint before the Supreme Court. What was the matter, sir? That was the hate speeches against the minorities there. I know what you're talking about. So what Supreme Court did? It said that go to High Court. So this is the failure of our Supreme Court of protecting the fundamental right of so many people from one state from its own constitutional functionary who has taken the chair by taking an oath. That was the time. तो इस तरह के जो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज है या बहुत बार होता है तो दैट फेलियर कॉस्ट द कॉमन मैन. फिर क्या होता है? इट बिकम्स प्रेसिडेंस. बराबर. हाँ, आज आपने माइनॉरिटी के राइट को नकार दिया, कल मेजॉरिटी वाले भी आएंगे कोई राइट्स लेके सुप्रीम कोर्ट, तो दूसरा वही सरकार तो सरकार है. इट इज नाइदर ऑफ माइनॉरिटी नाइदर ऑफ मेजॉरिटी. उनको पावर में रहना है तो वो वही बताएंगे कि आपने इससे पहले भेजा था वहां, इनको भी भेजो. Before I change the segment, sir, I want you to tell people the difference between directive principles and fundamental rights. Yes. Fundamental rights are undeniable rights of the citizen. They are enforceable in law. Equality before law से शुरू अगर करते हैं तो ये फंडामेंटल राइट है कि अगर वो लास्ट पर्सन है सोसाइटी का, इंडिजेंट है, उसके पास ₹1 भी नहीं है और दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, लेकिन कानून के सामने दोनों एक जैसे हैं. अगर उनके साथ फर्क किया जाता है तो उस फर्क के खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हैं. लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये सरकार के लिए है कि उनको सरकारें किस तरह से चलाना है. वो डिपेंड करता है सरकार की पॉलिसी, सरकार की फाइनेंशियल कंडीशन, कंट्री की सोशल कंडीशन पर कि वो किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता. एंड फंडामेंटल राइट्स, इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट्स. हाँ, बट जो फंडामेंटल राइट्स है इन थ्योरी दे कैन नॉट बी टेकन अवे. दे कैन नॉट बी टेकन अवे इन थ्योरी. यस, है ना. बट कैन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एवर बी टर्न इनटू फंडामेंटल राइट्स? यस. ओके. यू राइट टू एजुकेशन. अच्छा, यू कैन ऐड, आप फंडामेंटल राइट्स ऐड कर सकते हो, बिल्कुल ऐड कर सकते, नेगेट नहीं कर सकते. नेगेट नहीं. ओके, दैट्स द बेसिक वेरी ब्यूटीफुल डिफरेंस. So again, I go back to the question, sir. Nagpur has Dr. Ambedkar's legacy, RSS है, High Court bench है. As a practicing lawyer, वो एक complexity को आप कैसे देखते हैं, sir? नहीं, इसमें it's all a mixture. It's a beautiful mixture. मैंने जैसे पहले ही बोला था, conflicting zones अक्सर होते हैं, sir, कभी बहुत बार होते हैं. देखो, बेसिकली कैसा है कि अब इसमें आप तीन चीज़ों को इक्वेट नहीं कर सकते. हाई कोर्ट इज डिफरेंट. हाई कोर्ट का अपना कोई भी स्कूल ऑफ थॉट नहीं होता. नहीं, ट्रू. अगर यानी लिटरली या उसको देखे आइडियली तो उसका बस कॉन्स्टिट्यूशन इज द ओनली थिंग बुक इट हैज टू फॉलो. राइट. लेकिन आप दूसरी जो दो जगहों की बात कर रहे हैं उनके अपने स्कूल ऑफ थॉट्स जो डायगोनली अपोज जाते हैं. बराबर. तो वो अपने अपने एरिया में. लेकिन नागपुर का ब्यूटी ये है कि हम कभी उसको रास्ते पर डिसाइड करने को नहीं आते. I really respect that, sir.
we are quite mixed up people. यस, Wow. जब हम ये दोनों जगहों को याद करते तो हमको ताजबाग भी याद आना चाहिए कि ताजबाग भी है हमारे पास। क्या बढ़िया रेनोवेट हो गया सर। तो ये तीनों भी जगहें हैं, लेकिन इनकी कोई चीज़ नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था, लेकिन वो भी ऐसा लगता है कि ऑर्केस्ट्रेट था और बड़ा I don't think that should पर्पस have वाज happened. डिफरेंट। First नहीं नहीं, of all, पर्पस वाज समथिंग डिफरेंट। I understand what you're saying. In July 2024, you were designated senior advocate by the Bombay Bench. Only one of the 4 people out of 8 to be given this title, sir. Explain what happened for a person who doesn't understand what this means. No, look, Advocates Act defines advocates of 2 categories. One is advocate, one is senior advocate. Right. The rules are different, little bit. Basic work of advocacy is there. But when High Court or Supreme Court feels that somebody, by his experience in law, has expertised and has a leader role of a leader of the bar, or bar looks towards him with respect, and he's a person of an integrity, then it designates him. The role changes. But a lot of people don't realize the significance about this designation, sir. Because this is not an exam, it is not an application. You have done nothing. It is the decision made by the court internally about you. So, ये process. Earlier, the rules were, when I was designated, that 2 earlier designated or existing senior counsels, they have to propose name. So it was a filter at the stage of bar, whom they wanted to. After that, a permanent committee consisting of Chief Justice, 2 senior most judges, Advocate General, and 1 eminent jurist. They will scrutinize it. Then marking system was there on different criterias, where the pro bono work has a major jump. After that scrutiny, objections from the other stakeholders, if they have any objection against them. Thereafter, the proposal is placed before the full house. Okay. That is full court. All judges sitting in Maharashtra and Goa. Okay. That is the Bombay High Court. They will vote. And then the designation comes. Okay. So the privilege of designation is that you have the first right of audience. What does that mean? That means if you are appearing in some case, there are the different cases connected together. So you will have right to start it. But more restrictions are there. Now I cannot draft. The juniors have to draft. I cannot directly deal with the client unless their lawyer is with me, sitting briefing. I cannot appear in the court directly unless a brief counsel has engaged me. Oh, so everything is changed now. Everything is changed. I cannot file my wakalatnama. All wakalatnamas are cancelled. Oh. I am lawyer of nobody now. Other lawyers will approach you. Yes, of course. Right. Okay. And now I have less to do with the facts, more with the law. Court don't expect me to appear in those cases where only facts are involved. So now you can do more of interpreting the law. Exactly. The role is changed. That only lawyers can understand the roles. I think I'm understanding. Yes. So with this designation, as you said, everything is changed. Do you see how your colleagues or peers or juniors treat you? Has that changed? Of course, yes, it has changed. For the good. It is an honor bestowed by the High Court. It is a value addition. It is a more strength to my voice. True. So of course it changes. It's a very respectable position. That is up to us. You have to, because you cannot demand the respect. You have to command. Obviously. So this designation will stay with you forever? No, unless I do some mistake. Okay.
Acha, you are accountable also. I am accountable. I am continuously under scrutiny. Okay. So if something goes wrong, you can be demoted as There well. are many cases where the designation is withdrawn. What is the next level? No, we have only two types of lawyers. Okay. Where do you think the law is going, sir? Because even at this age, you have recently done something in insolvency. You have gone back to being a student after so many years. Was it difficult? No, it is very difficult. 2 years back, I have authored one article. The titling "Missing Art of Lawmaking." The new laws are being made, but the art of lawmaking is missing. They are flawed. They are defective. They are taking away several rights. Each and every law that is being made is challenged. They are being made without discussion in the houses, proper discussion, sending them to proper committees. In minutes, you are passing constitutional amendments and passing different laws. I was reading कि standing committee पे भी नहीं गया कुछ. Recently, Maharashtra legislature has passed a law titling as Protection of Religion Act. But in fact, it is contrary. It is taking away your fundamental right to religion. It is yet to come in force, but it is passed. And without any much discussion. But now you can't challenge it. No, that once it will become law, it will be subject to challenge. Right. But till that time, there will be injustice on so many people. True. So such types of law only because a section of society is demanding it. Making such laws is in fact mockery of the constitutional system. The houses, the legislatures we elect because it is in their name. They are legislatures. Their only and only work is to legislate. But it is not happening. But can't the judiciary step in between? No, judiciary doesn't have a power to legislate. It has to interpret. It can't be the executive also. It can't be the executive. It can't be the legislature. True. Sometimes Supreme Court has under Article 142 exercising powers under Article 142 have made the laws which were later on adopted by the parliament, like a Vishakha's case was there. And after that, protection of women at workplaces law came from sexual abuses. But it took almost a long 13 or 15 years. True. Why are you adding another feather to the cap by going into insolvency also? You recently acquired a diploma. No, not me, my daughter. Oh, okay. So Shad is doing all these things. So I think, but there was recently a phase where a lot of people were doing this IP. No, look, when new law comes, you have to make yourself acquainted with it. Okay. But for lawyers, only acquaintance is not. You have to be well read through. You have to be well read through. People come to you considering you as an expert. Right. While I joined my practice, means bar, at that time the Consumer Protection Act was just introduced. Then the forums came, commissions came, and one tribe of lawyers become expert of that. Then Motor Vehicle Act came. Under that, the tribunals were established. Motor Accident Claims Tribunal. Earlier, they were not there. Then we got a completely different set of lawyers expertise in that. Similar thing is happening with the Insolvency Code. We have established national company law tribunals. Earlier, insolvency cases and the winding up of company cases were dealt by High Court. So, those who have expertise there, then patent laws are there, what you called an IPR. So, this will go. These are the new avenues for the new lawyers. Though we need to argue them in that appellate stage, we have also to read it. But at trial stage, the new lawyers, they are doing very good, and it is good for them also. Very nice. So I want to come to a section, sir, where I play a devil's advocate
and I put you in the hot seat as you actually called it, Dock. You call it a dock. You are placing me in dock. Yes. So, PILs are supposed to be for the public, but mostly what we see ki, people filing them are lawyers, NGOs, activists. They know how the system works. So does it, like, the farmer crisis in Vidarbha, let's talk about it. He will never go and say he will go and file a PIL. So do PILs actually serve the purpose, or people are weaponizing PILs? No, I'll tell you regarding farmers first. Then I'll go to your question. In the year 2009-10, I appeared in that PIL for Farmers Society. Oh, wow. And our prayer was that Article 21 in the Constitution gives a right to life. And that is fundamental right. But if the farmers are ending their lives, that means this is violation of their fundamental right. This was the basic argument. And they are made to do it because of the policies. And the cabinet secretary at the center and the chief secretary at the state are responsible for this because they are at the head of the state. So make them accused. This was the simple prayer. In that, we got the relief. Dr. Manmohan Singh was Prime Minister. He brought Prime Minister's package for farmers. So in that package, there were several conditions. But when it reached the farmers, we found that the package was so tailored that Vidarbha farmers, where most of the suicides were occurred, they get less, and the farmers who were affluent from the Western Maharashtra, they got more. That's an execution flaw. That or a is planning flaw. That is not execution flaw or planning flaw. I always called it a conspiracy. So it happened. Sure. So it was filed for good. Benefits came, but didn't reach the real beneficiaries. That's what I observed. True. Maybe my misconception, maybe my less knowledge about that, but these are my observations. Now, PILs, we call it in different names. PIL is acronym, Public Interest Litigation. But at the same time, it is Publicity Interest Litigation. Yeah, exactly. That was I was. Again, it is Personal Interest Litigation also. True. So this Publicity Interest Litigation and Personal Interest Litigation has brought the PILs into bad name also. You must admit that there are black sheep in every profession. Agreed. Black sheep in every part of the society. But because of those black sheep, you cannot ignore the real issues. So we have to weed out these type of bad elements, but at the same time, we have to appreciate the real elements. I agree. Next question, sir. Usually we know the statistics are horrible. There are so many pending cases in Indian courts. Lawyers charge fees per appearance, Not always. Not always. Yeah. Some people charge per case, some people charge per appearance. The average Indian cannot afford going to the court or hiring a lawyer because they don't have that kind of money. So do you think the system this is a flaw in the design, because justice takes long, a lot of money is being spent. So by design ये सिर्फ affluent लोगों के लिए ही बना है ऐसा लगता है? नहीं, ये भी एक गलत फहमी है. इसका जवाब तो मैं हिंदी में ही दूंगा. सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि पेंडेंसी क्यों है. उसका रीज़न ये है कि हमारे पास में कोर्ट्स कम है, जजेस कम है. जितनों की हमको ज़रूरत है उससे 1/3 पे हम काम कर रहे हैं. ओके. हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पा रहे, लेकिन ये काम जुडिशरी का नहीं है, क्योंकि जुडिशरी के पास खुद का पैसा भी नहीं होता है, रिसोर्सेस नहीं होते. ये सरकार का काम है. अच्छा, तो सरकार has to set up more courts. Then more lawyers can be deployed. More judges can be deployed. Right. तो आपको एक रेशो जो देखना है, इंडिया का रेशो बहुत ही वो है कि
पर यानी कितने सिटीजन्स पे कितने जजेस, तो कितने केसेस पे, तो ये तो पाइलअप हो गई। दूसरा, केसेस कौन सी होती है, आप अगर देखेंगे तो 90% केसेस में स्टेट पार्टी है, यानी सरकार। तो सरकार ये मेजर लिटिगेंट है। तो सरकार ने यह सोचना चाहिए कि ऐसा क्या हो रहा है कि लिटिगेशन बढ़ रहा है, उन शिकायतों को दूर करना चाहिए। फिर एक जैसी केसेस होती है कई सारी, बहुत सारे सेक्शन, सपोज एक सेक्शन हम ले लें टीचर्स, तो बहुत सारे टीचर्स को शिकायत थी कि उनके प्रॉपर सैलरी फिक्सेशन नहीं हो रहा है, Right. ये सरकार के खिलाफ है उनकी शिकायत। अब सपोज 1000 टीचर्स को शिकायत है, एक टीचर का कंप्लेंट हाई कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, एक प्रिंसिपल ले डाउन कर दिया, इट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, प्रेसिडेंस बन गया, तो सरकार ने 999 के लिए वो अप्लाई कर देना चाहिए, तो उतनी केसेस खत्म हो जाएगी। लेकिन वैसा न करते हुए सरकार के अधिकारी या सरकार को कहती है कि हर एक ने अपने अपनी केसेस में वो जजमेंट लाना चाहिए। वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है, लेकिन कोई सोचने के लिए तैयार। तो ये सरकार को एक प्रॉपर लिटिगेशन पॉलिसी अगर सरकार बनाती है तो बहुत सारी केसेस कम होती है। जैसे टैक्सेशन में हुआ है, सरकार हर 2-3 साल में डिसाइड करती है कि इससे नीचे की जो केसेस है, इस क्वांटम के नीचे की, ₹1,00,000 के, 2,00,000 के, 4,00,000 के जो टैक्स डिस्प्यूट है वो हम खत्म कर देंगे। वो सारी केसेस एक दिन में खत्म हो जाती है। तो वैसा ही नीचे होना चाहिए। अब कोशिश की गई कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम लाया गया, आर्बिट्रेशन शुरू किए गए, लेकिन आर्बिट्रेशन बहुत महंगा पड़ रहा है, ऐसी शिकायत आ रही है। टाइम टेकिंग हो रहा है, शिकायत आ रही है। कई सारी शिकायत ये आ रही है उसमें कि रिटायर्ड जो जजेस हैं उनके रिहेबिलिटेशन का प्रोजेक्ट हो गया है, कि कोर्ट रिटायर्ड जजेस को ही अपॉइंट कर रहा है और फीस उसमें बहुत बढ़ती जा रही है, ये भी शिकायत है। तो इस तरह की फिर मीडिएशन आया है, उसका हम फ़ायदा लेना चाहिए, लेकिन ट्रेन मीडिएटर्स बनाने की कोशिशें शुरू है। बट अल्टीमेटली कोर्टों का जो कोर पार्ट है कि इंसाफ करना है, बैठ के फैसले करना है, वो नहीं हो पा रहा है। ये तो कोर्ट के बाहर लोग आपस में फिर मन मार के एक कदम तुम आगे बढ़ो, एक कदम हम पीछे आते हैं, ऐसा करके वो हो रहा है। उनको दोनों को फीलिंग नहीं आ रहा है कि इंसाफ हुआ है। रिजेंटमेंट कुछ ना कुछ बचता है उसमें, कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया है हमने, ऐसा लगता है। तो सरकार को एक लिटिगेशन पॉलिसी बनानी चाहिए और इस तरह से केसेस कम करनी चाहिए। ऑल्सो सर, डू यू थिंक क्लास एक्शन सूट्स इंडिया में अलाउ करनी चाहिए बाहर? देखिए, ये एक बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। बहुत सारी चीज़ें जैसा टॉर्ट्स इंडिया में बहुत ही कम है। अब जैसा मैं हमेशा फील करता हूँ कि हमारी जो क्रिमिनल केसेस कोर्ट में फाइल होती है उसमें से ऑलमोस्ट 70% छूट जाते हैं। कौन जिम्मेदार? और लॉट ऑफ पीपल से वो तो लॉयर नहीं छुड़वाया करके। इसके लिए जिम्मेदार है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। यू डिड नॉट हैव इनफ एविडेंस टू, फिर भी आप कोर्ट में आए। लेकिन उसकी जो आज 10 साल 15 साल बर्बाद हुए, उसके लिए जिम्मेदार कौन? एग्जैक्टली। तो वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का हमारे पास कोई प्रॉपर लॉज नहीं। आज आपने देखा 4 दिन पहले हाई कोर्ट ने मालेगांव बम ब्लास्ट में कुछ लोगों को छोड़ दिया, 20 साल 25 साल बाद। उससे पहले लाइफ खत्म हो गई लोगों की। तो वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था जिसने ये किया, उसका क्या? फिर उसने इन कलर ऑफ हिज ऑफिस किया है, तो वो तो सरकार जिम्मेदार है। तो सरकार का क्या? छूट गया करके पेड़े बांट दिया, ऐसा नहीं होता। तो ये लॉज भी हमको चाहिए। ये जो wrongfully incarcerated लोग हैं, sometimes the process is the punishment and not the punishment. Most of the time process is the punishment. So मान लीजिए जैसे आपने बोला मालेगांव में wrongfully accused, let's say wrongfully accused, और उनको ये हो गया, some form of compensation they will get, rehabilitation कुछ होगा? कुछ भी नहीं। आपके पास कोई सिस्टम नहीं है। But shouldn't the state pay something as a compensation? State should have a policy first कि कौन सी चार्जशीट्स जाना चाहिए, कौन से नहीं जाना चाहिए। Okay. आप उसी लेवल पे खत्म करो ना, कोर्ट में केस ही नहीं आएगा। ओके, राइट, बराबर, वेरी इंटरेस्टिंग। You speak about the constitution with a lot of conviction, but the same constitution was used to justify
the emergency. Right now, it is being used to restrict speech also. Uh, we are seeing detention without trials. So, is the document the problem, or is it the people who are wielding it? You have a car. To drive a car, you need acceleration. You have accelerator. You are driving the vehicle. You need accelerator. But why there is a brake? No need. Hmm. तो कार तो मैंने चलाने के लिए, रोकने के लिए थोड़ी लिया. आपने कभी ये शिकायत की ब्रेक से? Controlled driving is the word I think you're looking for. So if you have a complete book or complete system, complete code, then it should have such provisions also. So there are provisions for good times and bad times. But it is to be judged by a human. Is it a good time or bad time? आपको एक्सेलेरेट करना है या ब्रेक मारना है? Okay. तो ब्रेक दिया करके कार की कंपनी को आप बुरी कंपनी ऐसा नहीं बोल सकते. वैसा ही कॉन्स्टिट्यूशन है. तो अगर इमरजेंसी आई थी, कई लोगों का कहना है कि इमरजेंसी का पीरियड बहुत अच्छा था. Oh, really? Yes, you will get those books. I have met so many senior people who said that those were the good times when everything was in control. System was working very nicely. Personal rights सब तो चले गए थे सर. The common man was having all the rights. प्रेस का ये हो गया था, किशोर कुमार wasn't allowed. अब प्रेस का ऐसा है कि जब आज आप प्रेस पढ़ते हो, I know. तो आज तो इमरजेंसी नहीं है. नहीं. लेकिन आपका प्रेस नहीं छापता है जो उसने छापना चाहिए. So it depends on how you behave as a ruler. I was reading this article by somebody, I forgot. It's called Undeclared Emergency is what we are going to Yes, do. I always say that this is undeclared emergency. I personally say this. I personally feel it. True. So there are provisions already there. Whether to use them or not is depends on. Like there are provisions to impose presidential rule if there is disturbance in the state. True. Earlier in a day they used to be implemented. तो उस पर बड़ा शोर मचता था. लेकिन मणिपुर साल भर जला. I was wondering why didn't they do that? Entire world is wondering why we don't do so many things. But I mean, wouldn't it be easier for the government also to manage things? If you want a governance, then. Okay. If you have something else on your agenda, then it will not. I mean, I know the current government is getting a lot of heat for the mismanagement of Manipur. I'm just wondering, they could have escaped all that by just giving a precedence rule. I mean, I think I need to be more informed on this to form an opinion. I don't know. I'm not sure. Let us keep this for. Okay, next question. So, elevation of senior advocate. This is designation. Designation. This is mostly an internal matter. I want to extrapolate this and talk about the collegium system. A lot of people raise flag about the collegium system of the courts. We have seen some lawyers who want it, some who oppose it. What is your take on this? We don't have another system. Okay. Again, I come to Dr. Ambedkar, good or bad system. We got very good judges when the collegium system was not there. We got very good judges when collegium system was there. Same thing is regarding the bad judgments, those came. Very bad judgments came when collegium system was not there. Worse judgments have come when collegium systems were there. We have seen many judges, we are seeing many judges whom we feel that how? Why? Like in Delhi High Court recently we have seen it. One judge was requested to recuse and all dirty linen was
were watched in public. Sir, but that was such a smart move if you look at it. Not It- smart move. it What's was- the interest? We always see that what the interest the judge is having in a particular case. It's a Machiavellian way of looking at it. If you, I personally love If that. one move. party is feeling that it will not get justice, then whatever you do, it will have that feeling. You know, so it's such a way of doubt ना कि मुझे justice नहीं मिलेगा. Doubt you cannot prove doubt. You cannot prove You the cannot doubt, but prove you doubt. can give the grounds of doubt. Yeah, and you have And with the magnanimity, yeah. the judge should have said that, okay, there are so many cases, people are waiting for their cases to come. I'll take other cases. Why to waste time on this? No, because how I look at it, had this judge recused, that means वो doubt would have turned into kind of an allegation. दब्बा हो गया उनके ऊपर. तो धब्बा तो है ही. और नहीं करते is so it's basically proving that I have this bias and I'm it's नहीं. Not having bias is different. It is not regarding anything personal with the judge. आपको दिन के इतनी केसेस डिसाइड कर रही है, वो ए की है, बी की है या सी की है. It shouldn't matter to you. It doesn't matter to you. Doesn't matter to the state even. But if that person is saying that these are the reasons why I don't have faith in you, but you are insisting that I will decide it, and tomorrow if you give a judgment against that person, you'll say that look. वही तो बोल रहा हूँ, it's such a smart play done by Mr. Kejriwal, as much as I don't agree with most of the things he does, but sure, very smart move. So I'll go back to a question that I asked you earlier. कि after so many years, you have seen कि criminals बाहर निकल जाते हैं. A lot of people spend time in the process. The process is the punishment rather than the judgment. Does it ever feel heavy on your conscience? कि am I part of the solution or am I part of this machinery that does this to people? No. क्रिमिनल बाहर निकल आते हैं. क्रिमिनल यानी कौन? जिसने क्राइम किया है, वो आपके हिसाब से उसने क्राइम किया है ये साबित होने तक कि वो क्रिमिनल नहीं है. वो साबित कौन करेगा? उसकी जिम्मेदारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर है. कोर्ट को सिर्फ इतना ही जज करना है कि इसने क्राइम किया है या नहीं किया, और वकील को सिर्फ कोर्ट में अगर वो सरकार के तरफ से है तो बताना है कि क्राइम किया है, अगर वो अक्यूज्ड की तरफ से है तो उसने बताना है कि नहीं किया है, या सरकार जो बोल रही है इस सेक्शन में किया है, नहीं इस सेक्शन में पनिशमेंट नहीं होगा, उसको इस सेक्शन में होगा, लेसर होगा. तो अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी प्रॉपर एविडेंसेस नहीं लाती है कोर्ट के पास, तो हाउ इट विल गो टू माय कॉन्शियस? Okay, that's another way of looking at it. True. Everybody has to play his part. So, who decides, sir, कि कोर्ट में जो केसेस लगते हैं कि कल कौन सा केस लगेगा, ये कहाँ डिसाइड होता है? नहीं, देखिए अलग अलग लेवल के कोर्ट्स हैं. अगर ट्रायल कोर्ट की बात करें तो आज अगर कोई केस है तो अगले टाइम वो कब आएगा वो डेट उसी दिन डिसाइड हो जाती है. Okay. So this will be the date. मैक्सिमम कोर्ट में इसी तरह से डिसाइड होता है. जहाँ पे इमरजेंसी होती है वहाँ हम कोर्ट को मूव करते हैं कि अर्जेंसी आप आज सुन लीजिए, कल सुन लीजिए, तो कई कोर्ट तब के तब भी सुन लेते हैं. Okay. But why am I asking this question? कि जैसे I have stopped reading about news for a very long time. It is that's good for your mental health. me. So current affairs. Me also. 2014. I have not watched the mainstream media. I used to follow a lot of current affairs. मैं काफी 1-2 सालों से have stopped. But I remember when the demonetization happened or a few things happened, those things were sent to Supreme Court and they were pending for a very long time. But when I see Mr. Arnab Goswami, he gets immediately overnight the courts are open for him. This is privilege. This is a very different kind of privilege. Yes. I want to understand from the technical points. Though I agree what happened. Different courts. You are talking about Supreme Court. Yeah, I mean, though what happened to Arnab was, I don't think that was right. Supreme Court, that is in the control of Honorable Chief Justice.
when to grant circulation on mentioning, because there is system of mentioning for first hearing. You go to the court, you mention it before the Chief Justice, he will give you the time when and before which bench it will go. Hmm. That is the system with Supreme Court. Okay. If you come to High Court, we have a roster system. Hmm. The subjects are divided between different courts. Okay. If I have a service matter, I have to go before X bench. I have a criminal bench, I have to go before Y bench. I have a civil matter, I go before the Z bench. Then before that bench, I go for the first date. Tell the court that, look, this is my case, this is my urgency. Judging your urgency, that bench grants you the time. तो इस केस में ऐसा क्यों हुआ फिर? उस केस में सुप्रीम कोर्ट को लगा कि अर्जेंसी है, रातों रात कोर्ट खुल गया. बिल्कुल लगा सुप्रीम कोर्ट. अब किसी को क्या इमरजेंसी लग सकती है ये मैं कैसा जज करूं? अब ये तो आप लोग देख रहे हैं, आप जज कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट को लॉकडाउन के दौरान पैदल चलते हुए मजदूर नजर नहीं आए थे, आपको याद है क्या? ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं. नजर नहीं आते, नजर नहीं आने दिया जाता, कई बार खिड़कियों पे पर्दे डाल दिए जाता. But then lot of times we see Supreme Court taking so much cognizance of a lot of things as well. And so many times we see that Supreme Court ought to have taken cognizance, but it is not taking cognizance. Fair enough. I think it is the conscience of each judge. Yes. Specific to human to human. Human to human. Okay. Okay. There was this judge, sir, उनके बारे में हमने we recently saw in news, I forgot his name. A lot of cash was found in his house. Then he was referred back to Allahabad court, and there was a lot of. He resigned now. You can't impeach a judge. You can impeach a judge. What is the process? But there is no impeachment. Why? The process was started. It is very difficult to impeach a judge. Okay. Because it has to originate either in Lok Sabha or Rajya Sabha. You need a two-thirds majority and all that. It is kept just to protect the position of a judge. कि जज को हमेशा ये लगना चाहिए इंडिपेंडेंट रहने के लिए उसको सबसे पहले प्रोटेक्शन दिखना चाहिए. A message that the executive cannot remove you. वरना आप एग्जीक्यूटिव से डरते रहेंगे. If a judge does something wrong that he or she should not do, what repercussions do they face? There are several laws that deals with them. Like what? जैसा अगर उनके खिलाफ में इंक्वायरी हो सकती है, उनको काम देना से रोक दिया जा सकता है. There was this case of Mr. Atul Subhash. I just एकदम याद आया. His wife and his family were troubling him for a lot of dowry and money and all. So before he committed suicide, and he went live on Facebook for exactly 45 minutes, documents, court, ye wo, and this was kind of a dying declaration. He committed suicide in front of Facebook Live. It went really viral. He named the name of the judge also, whom was his case, and उन्होंने बोला कि मेरे को इतना पैसा दे दो, and I will give you favorable decision. I think this was a dying declaration only. Suicide हो गया. There was no action on the judge, is what I have understood. Why not? Look, I am not aware about fact of that case. करके मैं वो नहीं बोल सकूँ. But whatever you have said, कि why not against the judge? What action you think against the judge should have been taken? You're not. I mean, this is corruption, na sir. This is you're taking. So has he complained? There is a system. पर वो तो मर गया, उसने तो dying declaration को उसको मान उससे पहले उसने complaint किया क्या? I don't think so. Has he pursued? He had several options. जैसे उससे पैसे मांगा गया था. There is a dedicated department dealing with the corruption. He should have gone there. अच्छा, you can do that. Yes. If I think some judge is doing something that he or she should not be doing. अगर वो लोअर कोर्ट का जज है तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज को आप कंप्लेंट कर दीजिए. पर वो जैसे बहुत बार सर पुलिस एफआईआर नहीं लेती है, तो कभी वो नहीं लेंगे. ऐसा अभी तक की शिकायत तो नहीं आई. नहीं हुई है. Okay. Has that been acted upon ever? Yes, many times. Okay.
आपको पता ही नहीं चलता कितने जजेस को हर साल स्पेशली अप टू द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज डिसमिस किया जाता है, कंपलसरी रिटायर किया जाता है, आपको नहीं पता चलता बाहर, और वो लोगों को पता न चले, यही सिस्टम के लिए बेहतर है। वरना जो वैसे ही फ्रेजाइल हो चुका है विश्वास, ट्रस्ट इन द सिस्टम, ट्रस्ट और सिस्टम में कम हो जाएगा। ट्रू। ठीक है सर, बहुत समय लिया मैंने। बिफोर आई लेट यू गो, आई एम गोइंग टू आस्क यू फ्यू रैपिड फायर क्वेश्चंस एंड देन वी कैन रैप दिस अप। वन बुक दैट एवरी सिटीजन शुड रीड। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके अलावा? आई न्यू आप ही बोलोगे। उसके अलावा? नहीं, देखिए बुक्स तो अपने अपने टेस्ट पर है। ओके। मैं कई बुक्स पढ़ता हूँ, लेकिन आपने बुक्स पढ़नी ही चाहिए, हर सिटीजन ने बुक्स पढ़नी चाहिए। वन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल जो सबको पता ही होना चाहिए। चैप्टर 3 पूरा पता होना चाहिए, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। द बिगेस्ट मिथ अबाउट लॉयर्स? उनको झूठ बोलना पड़ता है। वन कोर्ट रूम हैबिट जो आपको इनकलकेट करने में बहुत समय लगा? हाँ, टू कीप क्वाइट। That's actually a fair, intelligent one. A judgment you don't agree with doesn't need to be a famous one as well. The judgment regarding Babri Masjid case. Okay. One thing about Nagpur do you think that people completely misunderstand? The civic sense. A question you wish somebody had asked you till today, but nobody has asked you up that. Can't. If not law, then what, sir? Farming. So do you think there's a farmer in you? Aage piche you want to dabble into farming? Maybe. You've spent your entire life defending people's rights, doing what's right. I think you have a very clear view of things, right and wrong. आप बहुत अच्छे से आप देख लेते हो. What would you like to say to every person of this country if they're listening to you right now? While you go for voting, think twice before casting your vote. उसमें भी तो allegations आते सर बीच में. That is also not a foolproof method anymore. It's what a lot of people are saying. Then there are so many things, but before that, right? Don't vote on the basis of religion, caste, creed. तो करना ही नहीं चाहिए सर, करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो डिसाइड करेगा आगे देश कैसा चलेगा. But a lot of time, you know, a lot of people say you get what you deserve. That's true. You choose good, you get good. You choose bad, you get bad. Yatha Raja Tatha Praja. बस विषय संपला. Thank you so much for being here, sir. Thank you. बहुत मजा आया. I want this to be a series of topics that we can pick up बीच में. I want you to be a regular person. हम एक टॉपिक लेंगे, उसको बार बार तोड़ मरोड़ के आगे पीछे सब. नहीं, इतना लंबा अगर चलेगा तो कोई नहीं देखेगा. नहीं देखते सर. I think I have a decent enough viewership. So thank you so much for being here, sir. चलें. Yes.